Hi everyone, this is Akshay Nagpal and I welcome you all on behalf of Commerce EduClub. And today we are going to discuss about a very short topic, as you can see on your screen, government companies. It forms part of your CA final law syllabus and it is covered in your miscellaneous provisions chapter. There are mainly three sections here. As you can see, the relevant sections are to subsection 45, which tells us about the definition of the government companies. Section number 394 and 395, which talks about who causes to prepare annual report and laying down of the same along with the audit report as per section number 143 subsection 6. And so there is going to be like 10 to 15 minutes of this session which covers everything, in which we'll cover everything. And so yeah, let's start this session. All right, so yeah, as per section number 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital, whether equity or preference, is held by central government or by any state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state governments. ये हो गया इसका first portion. Like section number 2 subsection 45 का first part is this, and second part is and includes a company which is a subsidiary company of such government company. First part tells us about not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or state government, or partly by central government and state government. And second portion tells us about if a company is a subsidiary company of a government company, then that company shall also be termed as a government company. All right. There is an amendment in this section which says here paid up share capital shall be constituted as total voting power where shares with differential voting rights have been issued. Differential voting rights we have already discussed in our previous session. In superior rights equity shares, if a company issues, then instead of reading the above definition 51% of the paid up share capital, we will read as not less than 51% of the total voting power. All right. If you don't understand the meaning of differential voting rights, please refer my previous video. You'll get an idea about that. And again, this definition is tested many times and there is an example in ICI study material as well. And you can refer that example as well. We'll study it, obviously. Let's go. Central government and government of Maharashtra. This is the third portion, like partly by central government and partly by state government. Central government and government of Maharashtra together holds 40% of the paid up share capital of MN Limited. एक MN Limited company है in which central government owns and government of Maharashtra together holds 40% of the share capital, paid up share capital, and a government company also holds 20% of the paid up share capital of MN Limited. ऊपर सेक्शन नंबर 2 सेक्शन 45 में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी if holds 20% along with the central government and state government, then that company shall be a गवर्नमेंट कंपनी. ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ. ऑलराइट, तो ये आपको टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है. मतलब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो कंफ्यूज होने की कोई बात इसमें है नहीं. तो उसको दो तरीके, मतलब उसको दो पार्ट्स में पढ़ना. जो ऊपर डेफिनेशन है मैं इसको दोबारा एक बार आपको पढ़ा देता हूँ. इसको आप दो पार्ट्स में पढ़ोगे, दो पोर्शन में पढ़ोगे तो बेटर रहेगा. As per section number 245, फर्स्ट पोर्शन हमारा रहेगा नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट हो गया हमारा अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. ऑलरेडी इन दोनों को अलग अलग अगर पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए आराम से. तो एग्जांपल नंबर 1 हम दोबारा पढ़ लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होल्ड करता है 40%, मतलब 51% से कम है तो नहीं माना जाएगा हमारा ये गवर्नमेंट कंपनी. एंड अ गवर्नमेंट कंपनी होल्ड्स 20%, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट कंट्रोल नहीं करता, सब्सिडियरी नहीं है एमएन लिमिटेड उसकी. देन अगेन इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. इसका आंसर पढ़ लेते हैं. इसको पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको रीट्रेट कर रखा है इन्होंने यहाँ पे सिंपली, एंड आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टुगेदर होल्ड्स 40% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एमएन लिमिटेड
A government company also holds 20% of the paid up share capital of ML Limited. In this case, ML Limited is not a government company because the holding of the central government and government of Maharashtra is 40%, which is less than 51% prescribed under the definition of government companies, and the holding of the government company in ML Limited of 20% cannot be taken into account while counting the प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 51%, क्योंकि ऊपर हमने पहले बता रखा है कि सेक्शन नंबर जो ऊपर 2 सब सेक्शन 45 है उसमें आप दोनों को अलग अलग पढ़िएगा कि मतलब पहला हमारा पार्ट था उसमें लिखा हुआ था कि इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी में होल्ड करती है, ये वाले गवर्नमेंट होल्ड करती है, तभी हमारा गवर्नमेंट कंपनी बनता है, नॉट लेस देन 51%। 51% तो एटलीस्ट हमारा होल्ड होना ही चाहिए। ऑलराइट, सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। PQ लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी बट नॉट अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा था सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 45 के अंदर, अगर हम पढ़े थे जब अभी हमने, दैट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। वहाँ पे होली ओन्ड का तो कहीं पे जिक्र था नहीं वैसे भी, तो इन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया कि PQ लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, वेदर PQ लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट। बट इन्होंने लिख दी साथ में कि होली ओन्ड सब्सिडियरी नहीं है, बट उन्होंने कोई सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 45 के अंदर कहीं पे मेंशन है ही नहीं कि होली ओन्ड सब्सिडियरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली इसका आंसर यही बनेगा, PQ लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी but not a wholly owned subsidiary of a government company. In this case, PQ Limited is a government company as per the definition of companies. As per the definition of government company, clearly specifies that a government company includes a company which is a subsidiary company of a government company. Whether subsidiary should be a wholly owned subsidiary or not is not clearly mentioned. तो हम इसको सिंपली मान लेंगे कि सब्सिडियरी, अगर सब्सिडियरी कंपनी भी है गवर्नमेंट कंपनी की कोई, then that company shall be the government company as well as per the definition of government company under section 2 subsection 45. all right, तो 245 हमारा यहीं पे खत्म होता है। 394 और 395 के लिए हमने सिंपली एक चार्ट क्रिएट कर लिया आपके रेफरेंस के लिए। अगर आप ये चार्ट भी सही से पढ़ लिया तो आपका सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए दोनों। ऑल राइट, इस चार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट थिंग इज, इफ हम प्रेजम्पशन लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी तो है ही है, ऑलराइट, एक गवर्नमेंट कंपनी है वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मेंबर, फर्स्ट पार्ट। और थर्ड पार्ट पढ़ते साथ में, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। ऑलराइट, इन दोनों केसेस में सेक्शन नंबर 394 ट्रिगर होएगा हमारा। और अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट हमारा मेंबर होता है गवर्नमेंट कंपनी का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर नहीं होता, देन सेक्शन नंबर 395 ट्रिगर होएगा हमारा, जो कि बात मोस्टली सेम करते हैं, बट प्रिपरेशन में थोड़ा सा, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट विद इन 3 months ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, इसमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी में ज्यादा फर्क है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इफ only central government is a member, or if central government and state government both are the members, then central government shall cause to be prepared the annual report within the 3 months of the annual general meeting। मतलब annual general meeting के 3 महीने के अंदर अंदर जो एनुअल रिपोर्ट बनेगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करवाएगा, इन बोथ फर्स्ट केस एंड थर्ड केस। ऑलराइट, एंड जो सेकंड केस है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट हमारा मेंबर होएगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करवाएगा जो एनुअल रिपोर्ट होती है। और लेइंग डाउन बिफोर विच हाउसेस मतलब पहले ये बोलेंगे कि जो हमारा एनुअल रिपोर्ट है वो हम ले डाउन करेंगे बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इन इधर केसेस सेक्शन नंबर 394 के हिसाब से हमारा 394 में वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मेंबर, तब पार्लियामेंट हाउसेस के बिफोर हमें इशू ले डाउन करना पड़ेगा जो एनुअल रिपोर्ट है along with the audit report। and in case where only state government is the member of the government company, then house or both houses of the state legislature। राइट, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मेंबर हैं गवर्नमेंट कंपनी के, देन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द हाउस और बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब सिंपल सी बात ये है, इसको याद करने वाला ये बेसिकली ज्यादा मुश्किल है नहीं इसमें कुछ। ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम पे जब आता है प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर होगी दोनों केसेस में, फर्स्ट और थर्ड केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करवाएगी। एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मेंबर होती है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करवाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मेंबर होती है तो फिर
सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करवाएगी, ऑलराइट। और जब ले डाउन की बात आती है, ले डाउन बिफोर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो पार्लियामेंट हाउसेज के बिफोर हम ले डाउन करेंगे। एंड अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अगर मेंबर है, देन द हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर मेंबर है तो पार्लियामेंट में भी जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में जाएगा, ऑलराइट। अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड कमेंट्स अपॉन सप्लीमेंट टू दी ऑडिट रिपोर्ट। सेक्शन नंबर 143 सेक्शन 6 में इस चीज के बारे में बताया गया है। और इसको ही एक्सप्लेन करके 394 सेक्शन में काफी लंबी चौड़ी बात सिंपल सी यही है, इतनी ही बात करिए जो हमने टेबल में लिखी है। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं हम जल्दी। ऑलराइट, फर्स्ट इज अबाउट सेक्शन नंबर 394, annual reports on government companies. Section number 394 of the Companies Act provides for annual reports on the government companies. It provides for annual reports on government companies in the cases where central government and state government is a member of the government company. जो हमने टेबल में थर्ड केस हमने कवर किया है. According to this section, where the central government is a member of a government company, इसमें ये वाला हो गया सिर्फ फर्स्ट केस जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा मेंबर है. The central government shall cause an annual report on the working and affairs of the company to be prepared within 3 months of its annual general meeting, before which comments given by the CAG of India and the audit report are placed under the proviso of section number 143 subsection 6 as already discussed, and as soon as may be after such preparation laid before both the houses of the parliament, जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें, with a copy of the audit report and comments upon or supplement to the audit report made by the CAG of India. अब इसमें ये वाला थर्ड हमारा जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट हमने अभी कवर किया, अब थर्ड पार्ट की बारी आती है. Where in addition to the central government, any state government is also the member of the government company, then that state government shall cause a copy of the annual report prepared under the subsection 1. subsection 1 का मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिपेयर करवाएगी, to be laid before the houses or both houses of the state legislature together with the copy of the audit report. तो इसमें बेसिकली ये बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी करवाएंगे हम ले डाउन की बात करिए, प्रिपरेशन जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही करेगी. ऑलराइट, सेक्शन नंबर 395 पे आते हैं, वेयर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी. इसमें बोल रखा है कि वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी बट वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट आर मेंबर, देन that state government shall prepare annual reports on the working and affairs of the company. According to this section, where the central government is not a member of the government company, every state government which is a member of the company, or where only state government is a member of the company, then that state government shall cause an annual report to be prepared within the time specified. मतलब 3 months ऊपर वाला वही सेम चीज बोल रखी है, as specified in 394 section 1, जो ऊपर वाला सेक्शन हमने रीड आउट किया है. And as soon as maybe after such preparation laid down before the houses or both houses of the state legislature together with a copy of audit report and comments upon or supplement to the audit report. That's it. और ये वाला सेक्शन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें सीधा ये बोल रखा है कि जो लिक्विडेशन के टाइम पे the provisions of this section and section number 394 shall apply to the government company in liquidation पे भी ये सेम सेक्शन अप्लाई होंगे. इन्होंने बेसिकली यही बात बोली है इसमें. तो इसको इतना ज्यादा रीड करने के बजाय आप सीधा ये वाला टेबल रेफर कर लोगे तो इनफ रहेगा आपके लिए. एंड दैट्स दैट, हमारा ये कवर हो चुका है, सब कुछ कवर कर लिया. सेक्शन नंबर 2 सेक्शन 45 काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट भी कर सकते हैं उसको एमसीक्यू के उसमें. ऑलराइट, तो दैट्स दैट, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल.